Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Myself Tirth. How are you all? Hope so you all are fine. So today I am going to discuss the concept of appeals and revisions, which is the most important topic of CA Final Direct Tax. Before moving forward, please help yourself. The notes of this topic is already given in the description box. As you would be knowing that part A of the appeals is already recorded and uploaded on my channel, and this is the part 2. In part A we covered the appeal part, and in part B we would be covering revision. Okay, so let's start. Section 263, revision of order prejudicial to the interest of revenue. CIT or PCIT can call for and examine the records of any proceedings in which the order has been passed by an AO which is erroneous and prejudicial to the interest of revenue. CIT can enhance, modify or cancel the assessment and direct for fresh assessment. Time limit to pass the order is within 4 years from the end of the year in which the original order of AO was passed. यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी AO ने कोई ऑर्डर पास किया है जो कि एरोनियस है और प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो जो भी रिकॉर्ड्स थी कि जो एओ के ऑर्डर के दरमियान प्रोसीडिंग्स में एग्जामिन किया गया था बाय एओ, तो सीआईटी और पीसीआईटी कैन कॉल फॉर एंड एग्जामिन फॉर सच रिकॉर्ड्स. सीआईटी जो भी असेसमेंट है उसको एनहांस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, एंड कैन ऑल्सो डायरेक्ट फॉर फ्रेश असेसमेंट. The order need to be passed within 4 years from the end of the year in which the original order of AO was passed. Next, appeal against order under section 263 can be filed at ITT. Please यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो भी order under section 263 है वो CIT अपील के सामने अपील नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये CIT और PCIT ही रिवीजन कर रहे हैं ऑर्डर. तो इसलिए जो भी CIT और PCIT ने ऑर्डर पास किया उसके सामने हम CIT अपीलेट में नहीं जा सकते, लेकिन हम ITET में अपील फाइल कर सकते हैं. Partial motive. CIT cannot revise matter involving appeal but can revise other matters not involving appeal of the same order. Suppose assessing officer ने 143(3) का जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया था तो उसमें 4 मैटर्स को लेके असेसमेंट किया था. अभी सपोज एसएससी उसमें से सिर्फ एक मैटर को लेके ही ITET में अपील करने चाह रहा है और बाकी के 3 मैटर को नहीं, तो उस केस में CIT अगर उसे लगता है कि वो जो भी असेसिंग ऑफिसर ने रूलिंग पास किया था वो एरोनियस है और प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो वो 3 मैटर को लेके रिवाइज कर सकता है अंडर सेक्शन 263. लेकिन जो एक मैटर है जो कि ITET में अपील किया था एसएससी ने, वो रिवाइज नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 263. आई होप यू गेट इट. Record means everything which was available or not available on record at the time of passing the order by AO. It means AO अपने ऑर्डर पास करते वक्त जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे वो, और जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे वो सभी CIT ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 पास करते वक्त रिकॉर्ड में मान लिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का सर्टिफिकेट. इफ एट द टाइम ऑफ पासिंग द ऑर्डर बाय AO the stamp valuation authority certificate is not available, but at the time of passing the order under section 263 the same certificate is available, then it would be deemed as a record case of a revision of order passed under section 263. Next, order passed by AO deemed to be erroneous insofar as it is prejudicial to the interest of revenue if in the opinion of CIT or PCIT order passed without making inquiries or verification. Next, order passed allowing relief without inquiring into claim. Order has not been made in accordance with any other order, direction or instruction issued by the CBDT under section 119. Order has not been passed in accordance with any decision which is prejudicial to the interest of SSE rendered by the jurisdictional high court or supreme court in case of SSE or other person. इसका मतलब जो भी असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था वो
विदाउट मेकिंग इंक्वायरीज और वेरिफिकेशन किया था, या फिर कोई रिलीफ अलाउ की थी विदाउट इंक्वायरिंग इनटू क्लेम, और जो भी ऑर्डर पास किया था विदाउट फॉलोइंग एनी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द सीबीडीटी अंडर सेक्शन 119, और ऑर्डर पास नहीं किया गया था इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द jurisdictional high court or a supreme court. Next, section 264, revision of order prejudicial to the interest of SSE. CIT or PCIT can call for and examine the records of any proceeding in which order other than referred under section 263 has been passed by an AO, which is erroneous and prejudicial to the interest of SSE. ये सेम टू सेम पॉइंट है जो कि हमने 263 में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे CIT और PCIT जो भी रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं प्रोसीडिंग्स के अदर देन द 263 रिवीजन ऑर्डर पास्ड. ओके, नाउ इन केस ऑफ 264, इफ द CIT or PCIT in its own motion passes the order, then they need to pass order within 1 year from the date of order passed by AO. If the application is filed by SSE, then they need to file within 1 year from the date of order passed by AO is received. And the CIT or PCIT need to pass the rectified order within 1 year from the end of the year in which application is received from the SSE. आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 1 year है, लेकिन यहाँ पे डेट लिखा हुआ है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे ईयर और यहाँ पे फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर लिखा हुआ है. Appeal against order passed under section 264 can never be filed. 264 में जो भी रिवीजन ऑर्डर पास किया गया उसके अगेंस्ट में कोई भी अपील फाइल नहीं हो सकता. SSE can apply for revision under section 264 only if the time limit to file CIT appeal has been expired or SSE waived his right of appeal in writing. Total merger. CIT cannot revise the matter involving appeal or other matters not involving appeal of same order. इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने 263 में देखा, अगर कोई भी असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 4 मैटर्स, तो उस केस में अगर SSE कोई भी एक मैटर को लेके ITT अपील में जा रहा है, तो CIT और PCIT कैन नॉट रिवाइज द ऑर्डर ऑन द रिमेनिंग 3 मैटर्स. प्लीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे 263 रिवीजन ऑर्डर में कहा गया था कि पार्शियल मर्जर इट मीन्स कि जब कोई SSE एक मैटर को लेके अपील फाइल कर रहा है लेकिन बाकी के 3 मैटर को लेके नहीं, तो अंडर सेक्शन 263 रिवीजन द CIT और PCIT कैन पास द रिवीजन ऑर्डर ऑन द रिमेनिंग 3 मैटर्स. एंड इन केस ऑफ 264, whether or not the SSE has filed the appeal on the 1 matter or all the 4 matters, under section 264, CIT or PCIT cannot revise the remaining matters. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Section 158A, special provisions for avoiding repetitive appeal. In case of an SSE for an earlier assessment year, if appeal is pending before High Court or Supreme Court on a particular matter and for an identical point. In case of same SSE for a subsequent assessment year, if the same matter is pending before AO or CIT appeal or ITT, then SSE can furnish declaration in Form 8 to AO or CIT or ITT requesting them that if they agree to apply decision of HC or SC in current case, then the SSE shall not appeal. AO or CIT appeal or ITT may admit or reject the application of SSE. Suppose Mr. A की फॉर असेसमेंट ईयर 1920 की कोई एक पर्टिकुलर मैटर पे अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट पे, और इन सेम केस मिस्टर ए की असेसमेंट ईयर 2021 में सेम मैटर की अपील पेंडिंग है CIT अपील में. तो उस केस में SSE एक डिक्लेरेशन फर्निश करेगा फॉर्म 8 में टू CIT अपील, requesting them that if they agree to apply the decision of High Court in current case, then the SSE shall not appeal, and the admit or reject of the application is solely dependent on the CIT appeal. Okay, I hope you get this. Section 158AA, appeal by department, a question of law pending before Supreme Court. In case of an SSE,
If a question of law is pending before Supreme Court against an order of HC in favor of SSC, same question of law in case of same SSC is decided by CIT appeal in the favor of SSC, then instead of filing appeal to ITAT by department, CIT or PCIT may direct AO to make an appeal to ITAT that the appeal against CIT A order will be filed only after the decision of Supreme Court. CIT or PCIT can direct the AO only after receiving an acceptance from SSC. If no such acceptance is received from SSC, then the CIT or PCIT may direct the AO to file an appeal to ITAT now. In other case, if a question of law is decided by the Supreme Court against an order of HC in favor of department, then CIT or PCIT can direct the AO to file appeal to ITAT against CIT or such appeal shall be filed within 60 days from the date of receipt of copy of order of Supreme Court by CIT or PCIT. Suppose High Court ने इन फेवर ऑफ एसएससी ऑर्डर पास किया और डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया अगेंस्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर का फॉर क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड सीआईटी अपील हैज पास्ड द सेम बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन फेवर ऑफ एसएससी, देन इन दैट केस सीआईटी और पीसीआईटी एओ को डायरेक्शन देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट करें एंड देन जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट तभी एओ कैन अपील टू आईटीएटी अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील. लेकिन such appeal shall be filed within 60 days from the date of receipt of copy of order of Supreme Court by CIT or PCIT. Or CIT or PCIT can direct the AO only after receiving the acceptance from SSC. And if no such acceptance is received, then CIT or PCIT may direct the AO to file the appeal to ITAT now against the order of CIT appeal. I hope you got it. Section 268A. Special provisions for appeal by department. Department can file appeal only if the tax effect is more than the following amount. For appeal to ITAT, more than 50 lakhs. Appeal to High Court, more than 1 crore. अपील टू सुप्रीम कोर्ट मोर देन 2 करोड़. आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट ये अपील तभी फाइल कर सकते हैं जब टैक्स इफेक्ट मोर देन 50 लैक्स हो, मोर देन 1 करोड़ हो और मोर देन 2 करोड़ हो. Section 268A empowers CBDT to fix monetary limit to regulate appeal by department in order to avoid litigation in small cases. If department has not filed appeal on a particular issue in case of a particular SSC in a particular year, then it shall not stop the department from filing appeal on the same issue in case of a same SSC in another year, in case of another SSC in any year. The SSC cannot contend that the department has agreed on a particular issue by not filing appeal on such issue. यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट अगर कोई पर्टिकुलर इश्यू पे अपील फाइल नहीं कर रहा है तो उस डिपार्टमेंट को कोई भी तरह से रोका टोका नहीं जा सकता अगर डिपार्टमेंट सेम इश्यू पे दूसरे ईयर में अपील फाइल करे या फिर दूसरे एसएससी में सेम ईयर में अपील फाइल करे. और एसएससी के पास भी कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो डिपार्टमेंट को कह सके कि वो ये पर्टिकुलर इश्यू पे अपील फाइल नहीं कर सकते. आई होप यू गॉट दिस. आई एम कंक्लूडिंग हियर बाय द टॉपिक. आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी. यहाँ पे मैंने पार्ट बी रिवीजन वाला कंप्लीट किया है. इन केस ऑफ एनी क्वेरी और सजेशन प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Please like and share the video with your friends. Also, please do subscribe to my channel for more of such useful videos. Also, don't forget to click the bell icon to stay tuned and connected with us. You can also follow us on the social media as the link is given in the description column below. Thank you.